मैं तो अपना बता रहा हूँ. When you say it should not be overruled, we observe number of judgments have been cited, including Faisal Wawda, same learned judge, not following Samiullah Baloch. My lord, I will, when I come to this way out, I will rely on Faisal Wawda. I think it is consistent. It explains. How do you reconcile the two? My lord, they will be reconciled. They are not. Can you reconcile the two? My lord, I will make submission on that. I think. कर देना. मैं वो तो आखिरी पॉइंट. नहीं आखिरी नहीं, देखिए हमें थोड़ा सा स्पीड अप करें ना. पहले my lord, वो फिर मैं अपने नोट्स के आखिरी पेज. नहीं आप आ जाएं. My lord, हमें और लोगों को भी सुनना है ना. नहीं मैं बिल्कुल जी, मुझे तो खुद. आप लाहौर नहीं जा सकेंगे सर. मैं आज लाहौर में गया तो जी मैं लाहौर शायद कभी भी नहीं जा सकूंगा. ये भी हो सकता है. So इसलिए मुझे प्लीज आज जाने. Let me try another way. Motorway closes at 3:30. Motorway closes at 3:30. चले जल्दी बताए ना. My lord, I'll finish in 20 minutes. चले. My lord, for me, the key to this issue, and I'm now sort of jumping to the last page of my argument. My lord, the key to this अगर आपने लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेंगे. My lord, वो मैंने अपने लिए अभी मैं आपको दे दूंगा. मैं एक आध दिन में आपको भैया तो मैंने गाड़ी में कल टाइप किया जी, बहुत टाइम नहीं था मेरे पास. My lord, the key for me to resolving this issue really is in para 6 of same judgment of Samiullah Baloch. जी पढ़े. A point which was put before the court, but then देखो कोर्ट तोबा कॉन्सेप्ट. तोबा कॉन्सेप्ट हाँ वो डिस्कस किया, आगे जवाब नहीं उसका. नहीं है वो इसलिए कि उन्होंने कह दिया. And what they have said there, the reason they did not consider it, my lord, is also significant. He was, however, candid to accept, and there the court is dealing with Sadar Aslam's submissions here. He was, however, candid to accept that except for submitting their affidavits in court, his clients had not made any expression of remorse, regret or repentance before the concerned authorities or the public. And the question arises, what would have happened if that had been done? The way out, as I see it, and which something Samiullah Baloch doesn't deal with, is exactly because of this, that if this is established, that there is genuine repentance, there is, and penance has been paid, then the effect of the declaration can come to an end. And then again we are reading words into the constitution. My lord, that is something, my lord, it's a question of interpretation. It is the question of interpretation. And my lord, I earlier posed a question, if I was the author of Imagine, it's not been written yet, Samiullah Baloch, and I'm hearing it for the first time, and I said it should be a 2-year ban. So it's entirely up to me what I do. I'm not saying that there should be a fixed plan. That's exactly what I'm saying. I'm just saying what is the test before me? It's not because Samiullah Baloch has held this. That's the end of story. No, there must be a logical reasoning behind it, reaching that conclusion. So I'm saying if I was the author, I say if that is 5 years, I do 5 years. Or I say that is much more serious, I do 2 years. So it's entirely my discretion. Unguided by any legal concept or constitution. I'm not in favor of that at all. I'm not advocating that. So it would be as valid a judgment as Samiullah Baloch. No, my lord. I'm not saying that. I am not saying that the judges should have a carte blanche to write whatever they want. Whatever they write has to be guiding principle बताइए ना हमें. So Mr. Uzair, your principle is that one principle or way out is that if there is a declaration, it can be washed away through penance and repentance immediately, whenever given. So if the declaration is given today, in 1 hour I submit an affidavit of repentance, the matter comes to an end, or is there a time frame? No, my lord. How would that work? As they say, my lord, the devil is always in the details. My lord, 62(1)(f) encapsulates 5 different concepts. Like, for example, there is a requirement that the candidate be non-profligate. Now, profligacy, the simple meaning is, spendthrift. You wasteful of resources. Yes. No. Now, that's something that's probably easier to fix. Suppose the declaration is that there was a misdeclaration in a form which has left the declaration, then there is no direct declaration in any case. We're assuming that the declaration is that you're not honest because you're... So next day he comes and says, I'm very sorry, this is... Allow to production of evidence. Absolutely. How you can reach the declaration. That has to be done. It can't be done without that. But आप कहते हैं कि अगर वो deficiencies, if we give any detail of those deficiencies, वो पूरी कर ले तो फिर वो ठीक है लाइफ पे. मैं तो कह रहा हूँ वो लाइफ बैन है ही नहीं. वो लाइफ बैन है ही नहीं क्योंकि
अगर आप रिपेंटेंस कर ले, अलाउ मी टू सबमिट माय लॉर्ड, और समीउल्लाह बलोच ने ये डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में और भी सिचुएशंस हैं जहां डिस्क्वालिफिकेशन कोर्ट की जजमेंट से फ्लो कर रही है, और कहा है कि जी वहां भी यही है कि जब तक वो कोर्ट की जजमेंट इफेक्टिव रहेगी तब तक डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। फॉर एग्जांपल 63(1)(a), 63(1)(b, तो 63 जब कोर्ट की डिक्लेरेशन सेक्शन 45 मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का कहता है कि अगर कोई पहले डिक्लेयर हुआ है एज मेंटली डिसेबल्ड, अगर वो ठीक हो जाता है तो कोर्ट अपने ऑर्डर वापस ले सकती है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई। सेक्शन 63(1)(b) अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को डिस्क्वालीफाई करता है, बट सेक्शन 41 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एक्ट आगे बढ़े जी वो डिस्चार्ज का प्रोविजन देते हैं। बट आपके सर, इन रिस्पॉन्स टू माय लॉर्ड्स क्वेश्चन, काइंडली सी आर्टिकल 184(1) and 2. Article 184(1) says the Supreme Court shall, to the exclusion of every other court, have original jurisdiction. उसके लिए है ना declaratory judgment. It is with regard to the provinces and the federation. Yes, but kindly read 184(2). In exercise of the jurisdiction conferred on it by clause 1, the Supreme Court shall pronounce declaratory judgments only. So this is a declaration created by the Constitution. This is not subject to any law. No law is required, nor can any law change this. This is a declaratory relief, a remedy created by the Constitution itself. And by definition, my lord, the declaration envisaged by 62(1)(f) cannot be given under section 42 unless you expand section 42. For example, it says, but this declaratory judgment is only in the context of clause 1 of 1 के लिए है, अगर आपका आर्ग्यूमेंट चले, हम आगे नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना, आपने 184(2) का एग्जांपल दिया, तो आइन खुद तय्युन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेटरी जजमेंट दे सकती है। जरा ठहरिए ना, 62(1)(f) में आइन ये नहीं कह रहा है, 62 में लिख रहा है कोर्ट ऑफ लॉ, या तो आप कहें वो इम्प्लाइड है सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग अंडर 184, इधर लिखने में क्या दुश्वारी थी? मैं अर्ज कर देता हूँ, ये तो सारी चीजें फिर अदालत ने की है ना, आइन ने तो नहीं की है। अग्री। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये आर्ग्यू भी हुआ कि जी ये, और आपने भी सवाल पूछा कि ये क्या डिक्लेरेटरी जजमेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि जी ये जो डिक्लेरेटरी जजमेंट्स का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सेक्शन 42 वाला नहीं है। ठीक, तो ठीक, यहाँ भी लिख देते। नहीं सर, वो इसके अंदर है, मैं आप अर्ज कर देता हूं। स्पेसिफिक है मिस्टर भंडारी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, ये डिक्लेरेशन ये सेक्शन 42 में दी भी नहीं जा सकती, आपकी अपनी जजमेंट है। वो मान ली बात, नेगेटिव, ये तो नेगेटिव डिक्लेरेशन है। हाँ, there being no judgment to the contrary, so the declaratory judgment has to say that someone is not honest, someone is not. So where do you draw the strength from that? कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऐसी डिक्लेरेशन दे सकते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये पहली my point number 1 is that this is a unique kind of declaration which is not given in terms of section 42. मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अगला सवाल आता है, एक एग्जांपल, अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक केस है सिविल केस, ठीक है, या क्रिमिनल केस ले लीजिए। एक गवाह आकर के झूठ बोलता है, कोर्ट उसको परजुरी के तहत उसको कन्विक्ट कर देती है, परजुरी के तहत। Is he disqualified for? It's a declaration now. You are a perjurer. You have lied in court on oath. You can't possibly be honest. So he's not allowed to contest elections for life. इसका जवाब दे दें। मतलब मेरे ख्याल में तो he is not disqualified on that basis. तो फिर तो it will directly conflict. खत्म हो जाती बात। Because आप जब किसी को परजरी के, देखिए तो डिक्लेरेशन हो गया ना, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट भी कर दिया। तो मैं जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड भी कर दिया। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ। आर्टिकल 10 उसका जवाब है। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। आर्टिकल 10 says there will be due process and fair trial. An elementary principle of due process and fair trial is notice of the charge against you. Now when somebody is being tried for perjury, is he under notice that he will also be disqualified on 62(1)(f)? Then that sort of kills the whole thing. So, आपके मुताबिक 62(1)(f) की डिक्लेरेशन कहाँ से आ रही है? पहले मैं आपको just explain that. वो कई स्टेजेस पे, कई फॉर्म्स पे आ सकती है। स्टेप नंबर 1 बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन चलते हैं। सबसे पहले आरओ के पास नॉमिनेशन पेपर्स जाएंगे, वो नहीं दे सकता। It's not a court of law. He has to be shown some declaration at that time from some court of law. By some court of law, and that declaration has to be specific for the purposes of 62(1). वो कहाँ से, मतलब give us an example. मैं चलता हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप वो स्टेजेस के थ्रू जाएंगे, शायद मेरी बात क्लियर हो जाएगी।
The fact कि RO नहीं दे सकता has already been held by this court in Aladino's Bhaios case, PLD 2020, Supreme Court 591. अभी वो नोट किया था जी, ठीक है. नेक्स्ट स्टेज, RO ने फैसला किया, अब हम इलेक्शन अपील में चले गए. आर्ग्यूबली, अब ये प्री इलेक्शन है हम. RO ने ये फैसला किया, इलेक्शन अपील में हम आ गए. अब इलेक्शन अपील अंडर सेक्शन 63 of the Elections Act, election tribunals comprise generally of sitting judges of the High Court. So they are judges, but then acting as persona designata. So arguably, if they have admitted facts before them, they have admissions, or they have undisputed facts before them, then they can make this declaration. At best would